Hello students, how are you? Today I will explain the next exercise 1D. Okay, you have to pay attention, very concentrate. First given, add. How you will do the addition? The first given, its first part given. 2 under root 3 minus 5 under root 2 and under root 3 plus 2 under root 2. Clear? How you will add this? First of all, you will write is equal to, remove the bracket. You will first of all remove the bracket, then 2 under root 3 minus 5 under root 2, and here you put the plus sign because addition has given here. Okay, and then remove this bracket and then under root 3 plus 2 under root 2. Clear, students? So how you will add? First of all, you know here the given under root 2 under root 3 अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी है? तो अंडर रूट 3 की वैल्यू 2 है, यानी 2 टाइम्स है. वैल्यू नॉट हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द अंडर रूट 3. अंडर रूट 3 की संख्या कितनी है? तो देन दैट इज द 2. एंड हियर अंडर रूट 2 की संख्या दैट गिवन 5 एंड साइन माइनस. सेम वे हियर आल्सो अंडर रूट 3 की संख्या दैट इज गिवन 1. The number of under root 3 has given 1. Here the number of under root 2 की संख्या 2. Clear? So you will add the same number with 1 together. So same under root 3 and under root 3 you can add to 1 together. एक साथ इसे जोड़ सकते हैं. So here under root 3 की संख्या 2 and there under root 3 की संख्या 1. So in this way 2 and 1 there will be 3 and under root 3 will be common. Clear? That will not add. इसे add नहीं करेंगे. That will be common. Same here. The number of under root 2 की संख्या here given 5 and sign its minus यानी minus 5 and there under root 2 की संख्या plus 2 given. तो minus 5 and plus 2 when you will evaluate then you will find minus 3 under root 2. Okay, plus minus 5 and plus 2, minus 5 and plus 2 when you evaluate then you will get minus 3 and under root 2 and under root 2 will be common. Any doubt? So in this way you will write this. Clear? So finally that will be the answer. That will be answer. Now after that question number second you see. In second also 2 to sum I want to explain because it will help you to solve the further question. 2 under root 2 plus 5 under root 3 minus 7 under root 5 and next question given 3 under root 3 minus under root 2 and plus under root 5. Clear?
So now first of all remove the bracket and put the sign of addition there. So then it will be 2 under root 2 plus 5 under root 3 minus 7 under root 5. Here and is a plus sign. 3 under root 3 minus under root 5, 2 and plus under root 5. Clear, students? Now same way in above question, earlier question which I have taught you, that you have to do the work. Here the given number of under root 2 की संख्या 2 and there number of under root 2 की संख्या -1 given. Clear? So now here the given +2 and there given -1, जो दोनों को इवेल्युएट करेंगे तो फाइनली you will get 1 and under root 2 will be common, यानी 1 under root 2. Again next question, next part है given under root 3 की संख्या 5 और under root 3 की संख्या +3. तो in this way +5 and +3 that will be +8 and under root 3 will be common. Clear? Here the number of under root 5 has given -7 and there given the under root 5 की संख्या +1. तो +1 and -7 when you will add, then you will get -6 and under root 5 will be common. Clear, students? Finally, when you multiply by 1 in this, then it will be under root 2 plus 8 under root 3 minus 6 under root 5. That is the answer. Clear, students? Any doubt? After that, the next question has given the multiply, means multiplication. How you will do in this? In this exercise, question number 2, that multiply given. Okay. The first question given. 3 under root 5 by 2 under root 5. Okay, and saying multiply. So then you can write here 3 under root 5 multiply by 2 under root 5 and multiply 2 under root 5. In these questions, first of all, here the given under root 5 की संख्या 3, यहाँ पे under root 5 की संख्या 2. तो first of all you will do the multiply by their numbers. इनके कितनी नंबर है 3, इनके कितनी नंबर है 2. पहले मल्टीप्लाई हम इनका करेंगे आपस में. क्लियर? तो 3 2 जा 6. अगेन under root 5 into under root 5. ओके, तो under root 5 into under root 5, जब भी हम अंडर रूट का मल्टीप्लाई अंडर रूट से करते हैं तो उसकी संख्या अंडर रूट 5 into अंडर रूट 5 that will be 25. Clear, students? And again 6 into ये अंडर रूट 5 25, that will be value of 5 square and finally it will be 6 into 5. ये रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि that has become the square, स्क्वायर बन चुका है और इसलिए रूट से बाहर आ जाएगा, सीधे हो जाएगा 6 into 5 is equal to 30. That is the answer. And here I want to explain the one rule. If
you will multiply by under root 2 into under root 2. So then directly you can write 2 only. Here, if under root 3 into under root 3 is equal to, directly you can write 9. Clear? Under root 5 into under root 5, directly you can write 5. Okay, you know clear how that has come? Because here I have explained, I have not written here direct. मैंने यहाँ डायरेक्ट इसीलिए नहीं लिखा. ओके, जबकि अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 हम यहाँ लिख सकते थे 5. ये स्टेप डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन हमने यहाँ शो किया. ओके, एंड दैट वे यू विल गेट. क्लियर? Now students, how you will do divide? The third question. In that any one question also you can get question number 5th, you see. That 5th part. In that 5th part there has given under root 10 multiply by under root 40. Clear? So then first of all under root 10 into under root 40. The number of under root 10 has given 1. The under root 40 value given 1. So finally you will write 1 into 1, 1. Now in second time you will multiply which has given the under root. The number which has given under root. So under root 10 into under root 40 is equal to under root 10 40 ja 400. Clear students? 1 की मल्टीप्लाई इसमें हिडन हो जाएगी, 1 की मल्टीप्लाई इसमें हिडन हो गई, सीधे हो गया अंडर रूट 400. एंड अंडर रूट 400 को स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो देन फाइनली इट विल बी 400 किसका स्क्वायर है? 20 का, यानी 20 इंटू 20. क्लियर? 20 इंटू 20 400. सो अंडर रूट 20 का होल स्क्वायर. ओके, एंड दैट विल कम्स आउट ऑफ द रूट. अब ये 20 रूट से बाहर आ जाएगा. फाइनली दैट विल 20. क्लियर स्टूडेंट्स? Now after that I will explain the divide. Question number 3 is given that divide 16 under root 6 by 2 under root 5. Sorry, 4 under root 2. Yes students, so how you will do divide it? So here first of all 16 under root 6, put the sign of division in place of by. By की जगह से division sign लिख देंगे. 4 under root 2. Okay. Now you write in fractional portion. In fractional portion 16 under root 6 upon 4 under root 2. Clear? Now you can reduce that way. 4 1 ja 4, 4 4 ja 16. Clear? Now 4 under root 6 upon under root 2. अब now under root 2, 4 under root 6 upon 2, that you can write
and then 2 1 ja 2 3 ja. Finally you will get 4 under root 3. That is your answer. Dear students, in this way, now the next question has given question number 4. Simplify. How you will simplify? That's important. Other question you will attempt on that base. First part given in bracket 3 minus under root 11 3 plus under root 11. That's important question. Clear? That how you will simplify it. So first of all, you know that has given a rule also. You can identity here you can adopt is a minus b into a plus b. It is the identity of a square minus b square. Yes students, ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे. Clear? So let me, that is the a minus b into a plus b. So same a minus b into a plus b. A minus b into a plus b के लिए हम क्या लिखते हैं? a square minus b square. So a का square means 3 का square. In that case you will write 3 का whole square minus b की वैल्यू यानी अंडर रूट 11 का होल स्क्वायर एंड फाइनली 3 का स्क्वायर 9 एंड अंडर रूट 11 का स्क्वायर 11 only. That's earlier I have explained. Under root 11 into under root 11 is equal to 11 and finally 9 minus 11 is equal to minus 2. That will be the answer. Dear students, but here different types. So question number 3rd. Now question number 3rd I will explain. That has given other identity. ये other identity भी that given थ्री माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर. ओके, it is of its identity will be a minus b का होल स्क्वायर. ओके, here we will use the identity a minus b का होल स्क्वायर. So that will be square of the first number plus square of second number minus 2ab. Clear student? That identity you will use. Clear? So here square of the first number 3 का स्क्वायर प्लस here square of the second number and plus 2 into first number 3 into second number under root 3
in this way. 3 का स्क्वायर 9 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3. Here minus given. Understood? So you will write here minus. Minus 2 3 ja 6 and 6 into under root 3 will be 6 under root 3. Finally you will get 9 plus 3 12 minus 6 under root 3. It may be also answer. आंसर हो गया. और नेक्स्ट जाना चाहते हैं, नेक्स्ट स्टेप. देन यू विल टेक द कॉमन. 6 here, 6 into 2 there. सो 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 माइनस यहाँ पे 1 लिखेंगे नहीं, सीधे अंडर रूट 3. दैट आल्सो इट मे बी आल्सो आंसर. क्लियर? Now different type of question is given next. Now it's 6 part has given. In bracket under root 5 minus under root 2 by into under root 2 minus under root 3. That is given. How you will solve that type of the questions? Dear students, so there is not you will use the identity which I have solved earlier. अभी जो हमने पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व किए उस आधार पे उस तरह की आइडेंटिटी यहाँ नहीं लगेगी. बिकॉज इट इज A तो देन इट इज B, बट हेयर B एंड देयर इज डिफरेंट. ये अंडर रूट 3 दिया हुआ है जो डिफरेंट है. यहाँ A होना चाहिए, जैसे A बराबर अंडर रूट 5 तो यहाँ भी अंडर रूट 5 ही होना चाहिए था. अगर B बराबर अंडर रूट 2 तो यहाँ B बराबर, इसलिए दैट इज नॉट प्रॉपर डिपेंड ऑन आइडेंटिटी. सो इन दैट केस यू विल राइट, इसे 2 तरह से कर सकते हैं. फर्स्ट, अब इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करना है तो पहले हम ले लेंगे अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर देंगे. तो पूरे के लिए लिख देंगे अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3. क्लियर? यानी इसकी मल्टीप्लाई पूरे में कर देंगे. एंड दैट आई हैव रिटन दैट टाइप्स. अब नाउ इन सेकेंड आई विल डू मल्टीप्लाई ऑफ दिस इन दिस होल. अब माइनस अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई इन पूरे ब्रैकेट में करेंगे. अब यहाँ साइन लगा देंगे माइनस under root 2 and multiply that same you will write here under root 2 minus under root 3. Clear? अब now you do multiply तो 5 under root 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 में होगा और फिर अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 में होगा, दोनों में होगा. तो अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 10 in such case. फिर again under root 5 into under root 15, then it will be, and sign has given minus 5 3 ja 15. Clear students? Now same way there also under root 2 का मल्टीप्लाई हम पहले 2 में करेंगे. क्लियर? उसके बाद फिर से हम इसमें भी करेंगे. तो अंडर माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2. अभी हमने बताया था रूल कि जब दोनों अंडर रूट सेम हो डेटा या डिजिट तो उसकी वैल्यू रूट से बाहर आ जाती है.
तो यहाँ भी बाहर आ जाएगी, सीधे लिख देंगे माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 टू दैट विल बी, and now in second this you will do multiply minus under root 2 into minus under root 3, तो minus into minus plus under root 2 into under root 3 is equal to under root 6. Clear students? So finally that will be the answer. Clear? Clear students? Now further I will explain on next day. Okay. Okay. Good day.